continue to cover. Now, in a big verdict, the 7-judge bench of the Supreme Court overturned a 1998 ruling that granted lawmakers immunity from prosecution for accepting bribes to make speeches or cast votes in the legislature. Now, the top court verdict says that the act of bribery is a criminal offense and is a poison to democracy. It also stated that immunity erodes probity in public life and that lawmakers are not above the law. Now, the 1998 Supreme Court judgment was made in connection with the JMM MP's bribery case, in which members of parliament allegedly took bribes to vote in support of the PV Narasimha Rao government in 1993. Now, the government had survived the no-confidence motion at that point. 7 के 7 जजों ने एक मत से कहा है कि पैसा लेकर वोट देना राज्यसभा के चुनाव में या पैसा लेके संसद में सवाल पूछना या पैसा लेके विधानसभा में सवाल पूछना, ये बिल्कुल ऑफेंस है। स्पीच भी कवर होता है? स्पीच के मामले में उन्होंने कहा है कि अगर वो अभी पैसा देके अगर स्पीच दिया है तो वो भी उसमें कवर हो जाएगा। अगर ये कहीं प्रूव हो जाता है कि अगर पार्लियामेंट में जो स्पीच दी गई है वो पहले उससे पैसा ले लिया गया है उस स्पीच देने के लिए, तो डिफरेंटली कोई इम्यूनिटी नहीं होगी। जैसे तहसीलदार के खिलाफ मुकदमा चलता है, थानेदार के खिलाफ मुकदमा चलता है, वैसे ही एमएलए एमपी के खिलाफ भी मुकदमा चलेगा, भ्रष्टाचार का मुकदमा चलेगा। और अच्छी बात यह है कि एमएलए एमपी कोर्ट जो बनी है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें ये मैटर ट्रांसफर नहीं हो रहे थे वो नरसिम्हा राव वाले जजमेंट के कारण। अब इस टाइप के जो केस हैं, जो पैसा लेके वोटिंग हुई है, ये सारे मुकदमे एमएलए एमपी कोर्ट में ट्रांसफर हो जाएंगे और साल भर के अंदर उनका भी फैसला होगा। तो बड़े बड़े रिमार्क्स की बोला है कि चीफ जस्टिस ने, बिग ऑब्जर्वेशंस इन दिस मैटर। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो ब्राइबरी है, एमएलए एमपी के द्वारा ब्राइबरी है, ये पॉइजन है डेमोक्रेसी के लिए, ये डेमोक्रेसी के लिए कैंसर है, इसको रोकना बहुत जरूरी है। इसलिए जो संविधान में इम्यूनिटी दी गई थी वो फ्री स्पीच के लिए इम्यूनिटी दी गई थी, पैसा दे के स्पीच देने के लिए इम्यूनिटी नहीं दी गई थी। कैसे देखते हैं ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वच्छ पॉलिटिक्स की तरफ, कि यानी कि इम्यूनिटी जो थी मेंबर पार्लियामेंट को, लेजिस्लेटर को, जो वो पैसे लेकर वोट दिया करते थे, वो अब खत्म कर दिया, यानी कि अब उनको भी सजा हो सकती है। लोगों के लिए अच्छी बात है, जो लोग वोटर्स हैं उनके लिए अच्छी बात है। लेकिन पहली बात यह है कि खरीद कौन रहा है। ये जो चंडीगढ़ में हुआ वाक़ा रिसेंटली, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेंस ली, हिमाचल में हुआ, क्रॉस वोटिंग हुई, बिहार में हुआ, गोवा में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो दावा करते हैं कि हम स्वच्छ भारत का अभियान कर रहे हैं, हम हर सतह पे सफाई कर रहे हैं। यहाँ क्यों नहीं सफाई हो पाई? और मैं समझता हूँ कि इसके साथ ज़रूरी बात है कि लेजिस्लेशन एक आ जाना चाहिए कि एक आदमी जब इलेक्ट हो जाता है, जिस मैंडेट पे इलेक्ट हो जाता है, उसको क्रॉस वोटिंग की इजाज़त नहीं होनी चाहिए, दूसरी तरफ जाने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। अगर वो जाना चाहता है, वो किसी के ऊपर डिस्प्यूट करता है, डिफरेंसेस हैं, तो वो री इलेक्ट होके जाए। Landmark judgment coming in from the 7-judge Supreme Court bench led by the Chief Justice of India, D.Y. Chandrachud, which will go a long way in cleansing politics in the interest of Swachh politics. We must say the Supreme Court has very clearly said that lawmakers taking bribes for voting, in fact, erodes. It's a danger to the polity and democracy and erodes probity in public life, and also said that bribery cannot be a subject matter of immunity, and the privileges enjoyed by the parliamentarians and members of legislative assembly is for ensuring that they can work freely, and it is not for ensuring that lawmakers are above law. And very, very big observations in the judgment, which in fact the Supreme Court 7-judge bench has set aside the 1998 judgment in the Narasimha Rao case, popularly known as JMM bribery case, in which 10 MPs had taken bribes to vote for, and in fact to save the Narasimha Rao government, and Supreme Court had, by a 3-2 judgment, said that parliamentarians under Article 105(2), 194(2) enjoyed immunity and cannot be prosecuted for taking bribes for voting. But that immunity goes today. This Chief Justice bench, 7-judge bench, has set aside that particular judgment and said that this immunity cannot sustain.